Hello students, today we will study about the nutrition. Yesterday we have discussed about the life processes. There are many different processes which are necessary for the regularity of our life, in which first process was nutrition. Nutrition का मतलब होता है mode of taking food, खाने को कैसे खाना. On the basis of this, ये nutrition दो पार्ट में डिवाइडेड है. पहला है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और दूसरा है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. अगर हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की बात करते हैं, इसका मतलब होता है ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपना फूड डिराइव करते हैं, लेते हैं फ्रॉम द सिंपल इनऑर्गेनिक सोर्सेज लाइक CO2 एंड H2O. और ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं उन्हें हम कहते हैं ऑटोट्रॉफ्स. वी विल टॉक अबाउट द इनऑर्गेनिक सोर्सेज. इनऑर्गेनिक सोर्सेज ऐसे सोर्सेज होते हैं जिसको हम किसी लिविंग सोर्स से नहीं ले सकते, as well as they are easily available in nature. That are the inorganic sources. Let's discuss about the heterotrophic nutrition. ऐसा न्यूट्रिशन ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपने फूड के लिए किसी और पर डिपेंड रहते हैं, उनको हम कहते हैं हेटेरोट्रॉफिक. Generally they follow this nutrition, that is heterotrophic nutrition, and the organisms are called the heterotrophs. The best example is all of us. All the higher animals can follow the heterotrophic nutrition. Now let's come again on the autotrophic nutrition. Autotrophic nutrition में जो autotrophs होते हैं, they prepare their own food. So the best example of autotroph is all the green plants. जब छोटी क्लासेस में we have studied about the photosynthesis. Photosynthesis में हमने यही पढ़ा कि जितने भी green plants होते हैं, they can prepare their own food by the process of photosynthesis. In the process of photosynthesis, CO2 और water आपस में रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, और वह फूड प्रिपेयर करते हैं, फूड स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च. और इसी का केमिकल फॉर्मूला होता है C6H12O6. यहीं पर वो दो बाय प्रोडक्ट्स और फॉर्म करते हैं, जिसमें एक होता है ऑक्सीजन एंड सेकेंड इज वाटर मॉलिक्यूल. This byproduct oxygen is very important for us because we breathe with the help of oxygen. Now, during the process of photosynthesis, there are three important events carried out in it, in which first is absorption of light energy. As we know that sunlight is necessary for the process of photosynthesis, तो वो जो light होती है, वो जो light energy होती है, उसको absorb करते हैं with the help of some chloropigment, and they are chlorophyll and xanthophylls. Second step is this light energy converts in the form of chemical energy, और ये केमिकल एनर्जी H2O को स्प्लिट करती है इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. नाउ द थर्ड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इज रिडक्शन ऑफ CO2. यहाँ पर जो स्प्लिटिंग हुआ है H2O का, H2 की फॉर्मेशन हुई है, ये H2 जब CO2 में ऐड होता है तो वी कॉल इट रिडक्शन. तो रिडक्शन किसका हुआ? CO2 का, बिकॉज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज देयर इन CO2. तो रिडक्शन ऑफ CO2 टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट. This is the third most important event. Now, if we will talk about the stomata, as stomata is very important organ for the process of photosynthesis because it helps in exchange of gases. तो यहाँ पर जो स्टोमेटा होता है, ये दो टाइप के स्टोमेटा को हम डिस्कस कर सकते हैं. पहला होता है फोटोऑप्टिक एंड स्कोटोऑप्टिक. If we will discuss about the plants, so plants we desert plants are also there, aquatic plants are also there. So different types of plants are also there. If you talk about the desert plants, तो desert plants का जो स्टोमेटा होता है, it is scoto-optic. It is scoto-optic stomata, and जो बाकी plants होते हैं, they have the photo-optic stomata. As these three steps are there, तो इन तीन steps में पहली जो दो steps है, it follows the light reaction, और जो last step है, it follows the dark reaction. If we talk about the desert plant, तो desert plant में कुछ ऐसी कंडीशंस क्रिएट होती है, एज वाटर इज ऑल्सो नॉट देयर इन द इनफ अमाउंट. तो जो स्टोमेटा होता है वो दिन के समय ओपन नहीं होता. अगर वो दिन के समय ओपन हो जाता है तो इट मे गेट मोर लॉस ऑफ वाटर. दैट्स व्हाई इट यूजुअली ओपन्स एट द टाइम ऑफ नाइट. जब वो रात में ओपन होता है, उस टाइम पर इट टेक्स CO2 फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, एंड दिस CO2 इज स्टोर्ड इन द प्लांट. दैट इज कॉल्ड द इंटरमीडिएट स्टेप. सेकेंड स्टेप, नेक्स्ट स्टेप इज इन द डेजर्ट प्लांट इज वह अपने अंदर एक कंपाउंड की फॉर्मेशन करता है, दैट इज कॉल्ड द NADPH2. ये NADPH2 जो होता है, इसमें H2 होता है, एंड स्टोर्ड कार्बन डाइऑक्साइड विच इज प्रेजेंट इन द प्लांट
ये CO2 के साथ मिक्स होकर उसका रिडक्शन करता है एंड इट फॉर्म्स द कार्बोहाइड्रेट. लाइक दिस देयर आर exception in the desert plant that it forms one intermediate step. That stomata is called as autotrophic stomata. Now we have seen that there are important requirements are also there in the process of photosynthesis. The first important requirement is chlorophyll, and chlorophyll is present in the plants in the plastid. हमने पहले छोटी क्लासेस में we have studied about the plastid. कि प्लास्टिक 3 टाइप के होते हैं, दैट इज क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट. हियर वी आर डिस्कसिंग अबाउट द क्लोरोप्लास्ट. एज दिस क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट, okay, and this is the green color pigment which is necessary for the process of photosynthesis. Second most important requirement is CO2, that is carbon dioxide. Carbon dioxide जो प्लांट्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर से ले लेते हैं और इसमें मोस्ट पार्टिसिपेशन जो होता है स्टोमेटा को होता है बिकॉज इट हेल्प्स इन द गैसियस एक्सचेंज. ऐसा एक मिसकंसेप्ट है कि वी आर थिंकिंग कि स्टोमेटा ही है जो गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं, बट इट इज नॉट लाइक दैट. अदर ऑर्गन्स लाइक स्टेम्स, रूट्स एंड लीव्स आल्सो sometimes participate in the gaseous exchange. If we talk about the gaseous exchange and we are discussing about the stomata, तो जो स्टोमेटा होता है, see the diagram of stomata here. These are the two guard cells which guards the opening and closing of stomata. जब ये CO2 को absorb करता है at that time stomata open होता है. इसकी जो outer wall होती है, this wall, it is flexible. और जो inner wall होती है, it is rigid. तो जब ये लेता है तो फूल जाता है, swell up हो जाता है, it is open. But as soon as it releases the CO2, again it comes in the form of shrink. और shrink form जो stomata होता है, it is called the flaccid stomata, and जो open form में होता है, swelled up होता है, that is called the turgid stomata. Like this, there are two structures of stomata. So students, we have studied about the autotrophic nutrition. Now some activities are also there in our book, in the class 10 book, that how we can prove that CO2 is necessary, chlorophyll is necessary. That we will study in our next lecture, and of course we will study about the autotrophic nutrition also.